Namaste everyone, and welcome to the third episode of the Learners Podcast. I'm your host, Jaiveer Malik. Today, we have with us Dhruv Solanki, who is a first year student of M.Sc Physics at IIT Bombay. Dhruv did his B.Sc honors in physics from St. Stephen's College, University of Delhi. Thereafter, he appeared for the IIT JAM physics examination, in which he secured an honor rank of 15, and also an honor rank of 8 in CUET-PG physics. Dhruv is here with us to share his journey about St. Stephen's, IIT Bombay, and how he secured such great ranks in both the examinations, and also life at IIT Bombay and all about the academic curriculum at IIT Bombay. Welcome, Dhruv. Welcome to the podcast. Thank you, JV. Yeah, so please tell us briefly about your like what are you doing these days and how is it going? Yeah. So, hello everyone. First of all, and thank you for welcoming me to this podcast. First of all, though, as JV said, he gave a brief introduction of me. I would like to build upon it. Hello everyone. I'll start again. I'm Dhruv. Currently, I've completed my first semester in IIT Bombay, and I am hoping that I'll pass through the second one easily enough. Yeah, As he said, I have done my bachelor's from St. Stephen's College, and I am a native of Bhopal, Madhya Pradesh. I have done my schooling all from there itself. And speaking about what I am doing currently, I basically, in my pastime, like to teach students who want to study physics from me. And apart from that, I like to watch some shows, etc. And yeah, so that's how I try to tend my free time because it's the same break and all. But apart from that, I'm an avid learner. And when JV said that the Learners Podcast is the platform which can help students to gain some knowledge from it, so I was really up for it. So a brief introduction of me is concluded here, and apart from it, I would like to say that the journey of physics has been really exciting for me. yeah, And uh, Starting from the days I was in class 8, 9, 10th, I used to like mathematics more. But then when I switched to 11th and 12th, I liked the application of mathematics more. So then I switched my interest to physics, and that's how ended up here doing masters in physics. yeah. Maybe. Thank you for joining us. Actually, I had also thought of doing this podcast in multiple disciplines, like all the available disciplines, like physics, chemistry, maths, and biology. So, Mhm. you're the first guest from physics. I'm glad you accepted my Thank invitation you. and joined us. Thank you I'm so much. sure the audience would benefit from the discussion. So, how was your life of B.Sc at St. Stephen's? Like, how did you get through that? And also about the CUET UG examination, if you could share something. So I'll start from the beginning itself. Yeah. So me as a person is a very curious person. I am a person who is जैसे मेरी मम्मी कहती थी कि मैं बहुत शरारती हूँ चीज़ों को लेके एंड मेरे को बचपन से खेलने कूदने का बहुत शौक रहा है तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट थिंग्स कि ये ऐसे क्यों हो रहा है एंड हम क्यों कर रहे हैं एंड दैट्स हाउ आई गॉट द क्यूरियोसिटी थिंग इनसाइड मी and hence I also wanted to learn physics more and physics and about science more, and hence I also took down the path of engineering primarily. Okay, I wanted to learn engineering first. So I was in coaching in my 9th, 10th, and then in 11th and 12th I heard about not DU, not any college. I just heard about St. Stephen's for the first time. Yeah. Yeah. It My elder brother, he told that during his time St. Stephen's held the record of like NIRF 1 for 7 consecutive years, and I was like, whoa, it's a great thing. And I was really fascinated by like how economics is and everything inside that. And then I was determined ki chalo let us also give a try for St. Stephen's, and then I got to know that ocha, okay, to get into DU you need 12 board marks, and I was pretty confident that I am not a good writer, so I won't get into it. So let's switch back to engineering only. Yeah.
But fortunately, during when I was in 12th, there was this announcement done by NTA that they will be conducting an examination called as CUET-UG that will be for all the central universities. And I was fortunate enough that मेरे में बुद्धि आ गई कि मैं दे दिया वो exam. And yeah, so I scored in 99.92 percentile in physics in my domain. Great, great. And I do not know the stipulated rank. I guess it's 30, 33, something. And that's how I got into Stephens. Even though I cleared J mains, J advance, I was like, रहने देते हैं. Let's switch to physics more क्योंकि वो पसंद है ज़्यादा तो वही कर लेते हैं. So that's how I got into Stephens, and Stephens was one hell of a journey for me. These 3 years, you enter as a guy who is 17, 18 years old, and when you leave as 2021, the age gap makes you more mature with time. Right. And it's not just about the academics, it's about the people who are there. You learn so much. You learn so much from people who are elders, who are seniors, the ones who you nurture, the juniors. So you have an array of people to deal with. And Stephens was pretty exciting for me. I remember being in 5 to 6 societies when I was in my second year, and I worked a lot in them. I was in college union, etc. So I had a variety range of experiences apart from physics, and that's how I got to know that okay, there are more things to life just than studying. So one thing that I want to tell about the students who are in college or going to college, whoever will see this podcast or who will learn from this learners podcast is the college life that you might have lived or going to live. Like that is the best life that you can live actually. The people you won't get anywhere else. So first of all, to enjoy the time there. उसके बाद फिकर करना academics की. So, but yeah, about academics, I was a pretty okay student in my time. मतलब वही एक हफ्ता पहले एग्जाम्स के पहले पढ़ना बाकी टाइम मजे करना I was that kind of a student, so I didn't take too much of a pressure of anything. And उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर went to exploring things, second year उन चीज़ों पे डेवलप करने में to build the things that I've explored in my first year, and third year was pretty, under the ground, and like I was pretty silent in my third year. Didn't take any societies or anything, just one. And and then I got to appear. Then I thought of appearing for IIT JAM because I thought कि ठीक है भाई physics पसंद है तो physics कर लेते हैं आगे. Right, right. Right. So that's how I ended up giving IIT JAM. So and then I secured ranks. Yeah. So Stephens as a whole was pretty good of a journey. You start with learning from subjects that are totally new to you, and also the subjects which are somewhat familiar to you. So we hear the terms such as classical mechanics when we are studying for 11th and 12th physics. But when you try to build upon it and you see, okay, there is much more to it rather than just solving F equal to ma, then you get to realize, ki, okay, there is more to learn, and then there is more to cast upon what you want to learn. Okay, so that's what you shared about your undergraduate journey, right? So, how did you? I'd like to go back to the before you gave CVT. Hmm. Were you appearing for were you preparing for JEE or what was it like? Did you actually prepare for JEE? Did you want to do engineering or what was that? Yeah. So as I was saying, see, I was the youngest in my family, and so if anybody used to face problems with their phones or laptops, they used to come to me thinking that I'm a tech savvy, and that Yeah. got into my head कि अच्छा ठीक है, I'm a tech savvy, so I should continue with something related to technology or engineering. And since it's a mainstream path in India, everybody doesn't think twice about it. If you like maths, take engineering. If you like physics, take engineering, something like this. So that was also shoved down my brain, and I was like ठीक है, क्या जाता तो क्या ही हो जाएगा, फिर मैथ्स पढ़ने में मजा आता ही है, पढ़ के देख Yeah. लेते हैं. So yeah, I started preparing for JEE. I got into coaching since class ninth formally.
So 9, Okay. 10th, 11th, 12th, I was Yeah. in coaching. But 9, 10th में I used to do this that school programs. So I had my evenings free. Okay. मैं बहुत खेलता था. So I didn't take any pressure about that coaching कि अरे भाई coaching में हो ये सब. I was pretty chill about it. But हाँ, एग्जाम टाइम्स पे you get serious. जैसे एनटीएससी वगैरह दिया था मैंने, I cleared it. तो Okay. उसके तो एनटीएससी के जैसे 1-2 महीने पहले से आप सीरियस हो जाओ, बोर्ड्स के 1 महीना पहले सीरियस हो जाओ, तो वो रूटीन, वो चीज अलग होती है. बट ऑन ऑन अ रेगुलर बेसिस में कभी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लिया चीज का. 11th 12th was COVID. So while Yeah. in COVID, we used to study with online things, and I am not pretty that sincere with online studies. मतलब मेरे से इतना रेगुलरली स्क्रीन पे नहीं देखा जाता अब, जबकि वही करना पड़ता है अब. बट ठीक है. Yeah. You it was new to me. तो ठीक है, 9, 10th, 11th, 12th, yeah, I prepped for JEE. I gave JEE. So हमारे टाइम पे my year was 2022. Yeah, तो 2022 में there were two attempts of JEE mains. The first one Yeah. I was I didn't score good, but second one I scored good and I cleared it. मतलब अच्छी percentile थी मेरी, and then I gave JEE advance and then cleared it too. But JEE advance के साथ साथ मेरा CUET का भी result आ गया था, and I was like, and in advance I, like when I cleared it, I didn't get good enough branch. Like I got Okay. IIT BHU, but I didn't get good enough branch to Okay. go into it. So I was like कि ठीक है कोई बात नहीं. फिर मैंने कहा ठीक है, let's pursue physics. The thing that because of the fact that if I might have gotten something better, I might have pursued engineering, but I'm very glad that I did not right Okay. now, because that gave me a different path and a different location to explore. Basically, that was Yeah. very really good of a decision of mine, and that's how I changed it from engineering to pure sciences. The journey of pure sciences, see, and it's not just about engineering. When you think about pure sciences, तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है easy होगा. When you get into it properly, when you try to read the books, तो मैं समझ में आता है कि okay, ये जी ये जिन्होंने लिखी है, मतलब हम वो लोग हैं जो इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं. सो दैट्स द काइंड ऑफ Exactly. मेंटेलिटी यू गेट इनटू कि ठीक है भाई, आप फिजिक्स के प्रोफेसर हो तो आप पढ़ाओगे इनको क्लासिकल मैकेनिक्स. M001 का कोर्स आप ही लोगे इनका जब आईआईटी में जाओगे. तो Yeah. वो एक मेंटालिटी के फिर साथ आप पढ़ते हो, देन यू ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो वो एक फिर मेंटालिटी चेंज हो जाती है. लाइक इंजीनियर्स आर द टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, उनको चार ऑप्शन दिखते हैं. दे डू नॉट सी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द Underlying concept. क्वेश्चन, द अंडरलाइंग थिंग्स. या so they do not see the underlying concepts behind it कि ठीक है भाई, पढ़ लिया ना, नंबर आ गए ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं. So they do not try to retain it. Okay. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, फिर तो क्या ही फायदा है भाई, मतलब ऐसी नॉलेज का. एंड टू बी फ्रैंक, जब मैं पढ़ता गया तो तब मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, प्योर साइंसेज इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स जो आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको शेप करती है कि आपको पढ़ना कैसे है. इट टेल्स यू हाउ टू स्टडी. So it's not just about the professors coming and teaching, taking attendance and going. It's just about you sitting with books and troubleshooting your problems with it. That's what is more important at the end. And what I feel is कि one of those things was responsible at the end कि ठीक है, it's not just about engineering. See, mainstream fields अपनी जगह पे ठीक हैं, 20 लाख students दे रहे हैं, there's a hype about it. Need भी है, but there's a hype about it. It's fine. Yeah. But when you try to read the subject, go into the subject, it's a different thing altogether. So yeah, fair engineering. Yeah, I started with engineering, and a lot of my friends are engineers right now. I mean, वो fourth year में हैं अब सारे के सारे, Yeah. and they are at the verge of breaking down क्योंकि उनके किसी के placement हो गया है, किसी का नहीं हो रहा है. They are all Okay. just messed up in their heads कि ठीक है भाई, अब हम क्या करें, हम क्या नहीं करें. Pretty chill. मैं तो आराम से भाई, मेरी मास्टर्स है और मैं I I am in a different zone than them. मैं भाई मैं relate नहीं कर सकता. So that's the kind of mentality you get when you basically have an attitude कि ठीक है, you need to go beyond just placements and everything. So yeah. Yeah, though, so the reason of starting this podcast was basically that. So basically, when I interact with my juniors, they are, in a guilt or something like they regret joining B.Sc. So I Hmm. wanted, like you shared your journey, Hmm. like you joined IIT Bombay after Stephens, and Hmm. you're enjoying your journey in basic sciences.
So that Mhm. is what I wanted the viewers who are watching this podcast will get to learn about this, that a journey in basic science is also something that you can pursue, and you can pursue well. Than a Hmm. traditional engineering or doctor, or like the Hmm. traditional paths Hmm. that are currently being, people are running after it, 20, 25 lakh students, as you mentioned. And the Hmm. selection is very narrow. And especially, you know the subject, right? We know physics, chemistry, and maths. We don't know like what what we are going to be taught in engineering. So we Hmm. don't actually get the gist of the subject. We just join. If they Hmm. join, Hmm. uh, Hmm. they'll probably like it or not like it. But you can always make a career in basic sciences. Right. Yeah, so that was in the back of my mind when I joined IIT. I wanted to, start this kind of discussion in the public domain. Yeah, so how was the journey from Stephens to IIT? Like, did you take any coaching, or did you study from the books, or did you, मतलब self study थी, coaching थी, थोड़ा सा उसके बारे में अगर please. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो द थॉट दैट यू शेयर्ड मैं उस पे पहले बात करूंगा एंड देन Yeah, द क्वेश्चन दैट यू सेड sure, sure, sure. तो आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन वो मेटलर्जिकल साइंसेज में है वो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है एंड द फैक्ट दैट आने से पहले उसको कुछ नहीं पता था कि मेटलर्जी होती क्या है सो दैट बट व्हेन यू इट जस्ट क्लिक्ड इन माय माइंड कि स्टूडेंट्स व्हेन दे आर एट 16 17 एडवांस देते हैं दे फिल द जोसा काउंसलिंग दे डू नॉट नो एनीथिंग कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ उन्हें आईआईटी दिखता है उन्हें प्लेसमेंट का स्टैट्स दिखता है खत्म द मिड जर्नी ऑफ 4 years दे बेसिकली ट्राई टू निग्लेक्ट इट एंड थिंक कि ठीक है चौथे साल के बाद वी विल बी सेटल्ड बट ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं इन जनरली सो इट्स नॉट अ स्मार्ट डिसीजन टू मेक आई अंडरस्टैंड बट what I want to say is कि about pure sciences जैसे मेरे recently was a story there was this guy he was in my batch he cleared J he went to IIT Bombay and now I am in IIT Bombay after 3 years so I met him Hmm. and he said कि मतलब क्या हुआ भाई तू तो अच्छा पढ़ता था तूने ये क्यों लिया and I was like भाई Yeah. क्या मतलब है इसका so I was thinking Yeah. in my mind कि मैंने उनसे पूछा मैंने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो बोलता AI ML तो मैंने कहा ये जो AI ML की 2024 का जो नोबेल मिला है ना ये फिजिसिस्ट को Yeah. मिला Yeah. 2025 में तुम क्वांटम में जाना चाहते हो उसका नोबेल फिजिसिस्ट को मिला Yes. तो मैं जो AI और ये जितना तुम सोच रहे हो ना ऑल दीज आर मेड बाय फिजिसिस्ट द पीपल हु आर यू ट्राइंग टू over par na you are building upon the steps they have already laid so basic Yeah. sciences are the steps see what I feel is engineering is applied sciences मुझे तो यही लगता है इज एवरीथिंग Yeah. इज अप्लाइड फिजिक्स एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स है आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे इट्स एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स क्लासिकल स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स Yeah. सो इट्स सो इट्स ऑल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक साइंसेज दैट वी स्टडी तो उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हम समझ सकते हैं एप्लीकेशंस वो Hmm. बेटर हैं बट नन इज above the other मैं ये सोचता हूँ बट people tend to forget it now back to your question um your question was कि मैंने कोचिंग वगैरह ली नहीं मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी Okay. I there I just used to see those YouTube videos one shots of जो कोचिंग डाल देती हैं Yeah. Yeah. एंड मैं बस को थोड़ा बहुत उन्हीं से देख लेता था एंड देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन वो साथ में मैं वो अभी आईआईटी कानपुर में है तो Okay. वो भी एमएससी परस्यू कर रहा है इंटीग्रेटेड तो उसने एक कोचिंग की वो ले रखी थी टेस्ट सीरीज बस मैं उसके साथ बैठ के कभी कभी लगा लेता था सो दैट वो मतलब एक्चुअल में क्या है ना इफ यू स्टडी फॉर 3 years इन योर बीएससी Yeah. फॉर द एंटायर करिकुलम ऑफ जैम इज कवर्ड अगर Hmm. आप ढंग से पढ़ रहे हो 3 साल आपने कर लिया है एंड एट द एंड यू विल फील कि ठीक है भाई ये तो मैं पढ़ चुका हूँ इफ यू हैव मेड नोट्स आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए so you will feel that you do not need to study anything else regarding books there are a list of books हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी बुक्स होती हैं yes I did refer to them at time to time अब मैंने अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे फॉर जैम बट या द स्ट्रेटेजी द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फॉर जैम इज एन एप्लीकेटिव पेपर वो फॉर्मूला बेस्ड पेपर है उसमें बहुत ज्यादा रिगरस थ्योरी नहीं आती जस्ट लाइक जेस्ट का पेपर हो गया टीआईएफआर का पेपर हो गया ऐसा पेपर नहीं है वो इट्स मोर ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है so you need to be thorough with the formulas you need to be thorough with कि आप भाई पेपर ज्यादा दो you need to be thorough with the pattern of the paper itself तो आप you need to you can juggle it better तो I started my preparation. Actually, I was also planning for MBA first, and then I was Okay. कि ठीक है कि भाई मैं switch कर जाऊंगा, and I was like कि ठीक है let's try to give MBA, and फिर that plan didn't work out. तो I remember my ZAT exam was on 5th January 2025, I guess, and मेरा जैम का एग्जाम वाज ऑन 2nd February Yeah. तो
6 जनवरी से 1 फरवरी तक की ही पढ़ाई करी है मैंने। Okay. जो जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करे हैं, मॉक्स अटेम्प्ट करे हैं, वो बस उस 20-25 दिन के गैप में अटेम्प्ट करें, एंड दैट वाज इट। मतलब उससे ज्यादा, उससे कम आप, मतलब उन 25 दिनों में आई रिमेम्बर गिविंग लाइक 40-50 मॉक्स, और रोज के 1-2 मॉक एंड देन एनालिसिस। तो दैट बेसिकली हेल्प मी बिल्ड द मसल मेमोरी इनसाइड माय हेड कि ठीक है भाई, यू नीड टू अटेम्प्ट इट समथिंग लाइक दिस एंड दैट। दैट वाज माय स्ट्रेटेजी। इट वर्क फॉर मी बिकॉज मैंने 3 साल ढंग से नोट्स वगैरह बना के करे थे। सो या, आई डिडंट अटेंड एनी कोचिंग, बट या, द स्टडी दैट आई डिड फॉर लाइक कॉलेज एग्जाम्स, दैट वाज इनफ फॉर मी। Okay. Okay. So self-study worked out for you. हाँ, सेल्फ स्टडी इट कैन आई वर्क आउट फॉर एवरीवन। द थिंग इज, यू Okay. यू नीड टू बी सिंसियर इनफ कि भाई आप उसे वर्कआउट करा जाओ। सो दैट्स वन थिंग। So if a student is in their B.Sc first, second, or third year, हम्म। so third year might be having their JAM exam on 15th of February only. हम्म। So for the second and first year students, what matlab, if you would like to sum up from your journey, what should say they do to get the better conceptual clarity and also in exams? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, द करिकुलम इज नॉट वेरी हेक्टिक इन फर्स्ट ईयर. The professors will make you do work more in academics in the first year, but the curriculum is not very hectic. You basically study the subjects that you have already studied in 11th and 12th and try to just one step further from it. So first year you just need to have a good grasp of whatever the basics you are trying to study. ठीक है, take a good look at the books. ठीक है, and in first year you just need to understand how to read books. So Okay. there's this. See, I am also not a very great person on explaining how to read books because I am a lecture person basically. मेरे को lecture ज़्यादा पसंद है. But if you are to into reading books, क्योंकि पढ़नी भी चाहिए, it gives you conceptual clarity better than the lectures, I would say. But if you are into reading books, so first of all, you need to understand how to read academic books. There is, you read a book, you do not need to copy everything. You can take a pen, paper, like pencil le lo, and then underline things and then try to understand, visualize it, copy mein likho, and build concepts, question solve karo. That's one way of doing things. So I would say for in the first year, try to figure out on how to study, and in the second year, see, on if you understand on how to study, it's not just about jam. आपको कोई भी एग्जाम देना है ना आगे, it will help you in that. So लोग यूपीएससी की भी किताबें पढ़ते हैं. Many of my friends from BSc physics, they are taking physics as optional and then they are appearing for UPSC. It's beneficial for them. क्यों? क्योंकि physics is one of the subjects जो आपको rigor करना सिखाता है. Yeah. Yeah. So physics is the one subject that helps you do hard work. And in the process, when they are building first year, say they were the people who started reading books with which gonna help them. So for example, in the first year ka first semester, there was this book in physics called NK Bajaj. It was in waves and oscillation. The thing is, I had no clue because I was a JE guy. I had no clue how to read books because we were the people who just solve numericals. We used to get DPPs, हम तो solve करते थे, and we file like ठीक है, fine. We are fine with it. But to read books and to understand concepts from the book, now that was a real challenge for me. So that transition period, you need to cover it in the first year, and it has to be with everyone, regardless of whichever subject you are in. You are in BA economics or B.Sc physics or history or any subject that you are in, you need to understand how to grasp the concepts from the books itself. In the second year, you need to understand. Okay, first year you do the preparation, you build yourself, build a character for reading, etc. In the second year, you basically try to understand um, the application process of it. Now, apart from it, second year has a lot of its distractions, which I will not name now. So, so societies are there, your friends are there, other familiar relationships are there. So there are a lot of challenges that come with second year. But what I would say is कि second year also gives you an opportunity to get ahead of the people that you are trying to compete with, because nobody is that serious in the second year. एंड आई वुड नॉट से कि आप भी इतना सीरियस रहो, बट एटलीस्ट हैव अ गोल इन योर माइंड कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड ईयर इटसेल्फ. So start reading about things, start understanding things, go beyond the subject at times, talk with your professors. And it's not just about jam. If you want to go abroad, ठीक है, building a rapport with your professors is one of the very important things because they are the people who will be writing a letter of recommendation. And if you have a very
sorry for my language, a shitty repo with them, na, they will not give you a good LOR, and the chances of you getting into the scholarship, any scholarship that you want or anything, get would tend to zero at the end, because everything depends upon them. So that's what I say. So second year is not just about academics, it's about more things that are related to academics. So around the subject also, around the bush also, you need to beat. And second year is the one that you try to gain knowledge about whatever exams you're trying to give, the opportunities that you're trying to have. So there is this friend of mine who got into Oxford recently. So right, so he got to know itself when he started exploring about where can I study my masters in, and in the second year itself he started becoming serious. He did internships in second year related. So he did in non-linear dynamics from IIT Delhi, and now he's in. So when you get enough experience about reading your application part, that is to be done in second year. Okay, building a profile of yourself is done in second year. Now the third year, now this is all being done in second year when you're also handling your academics. So academics is now in second year academics get tough. It's not easy because you are facing subjects that you have not done before now. So now you are entering into the unknown domain, uncharted territories. Ki bhai, okay, solid state mein na you will, for the people who will be watching in physics, you when you are second year, तुम solid state पढ़ते हो. I heard the term brilliant zone for the first time. I heard these things for the first time. I was like, what is this? So I need to sit with that book, Garg Vansal Ghosh, with in thermodynamics, and that Puri book in solid state physics. Ki, okay, bhai, I need to understand what is this. So now things are new to you. So all this takes up more of your time, and now you have to do this. So second year is complete grinding. A third year is what I would say is the final battle zone. So in third year, you need to revise everything that you have done in 2 years in your academics. Make notes. Always prepare notes. तुम digitally बनाओ, doesn't it does not matter. But you should have something that you can always bounce back to when you need to revise things. And make the habit of having notes from the first year itself. First year, second year, third year. So in first year, I did not make notes. In second year, I started making notes, and I regretted not making notes in the first year. So when I in the second year I started making notes, I realized how easy it is to when you want to revise it during your internals or your um, final examinations or practicals, anything. So make notes of everything. ठीक है, everything मतलब पूरी book नहीं छापनी है. Make notes of whatever you're trying to learn. And in the third year when you are there ना, it becomes pretty easy for you because when you see the jam syllabus, आधे से ज्यादा चीजें तो होती नहीं है. जो यूनिट आपको बोली जाती है ना, आधे से ज्यादा चीजें जैम के सिलेबस में है ही नहीं. जैम इज अ वेरी वेरी ओपन बैटल फील्ड, जिसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है भाई, मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए. क्योंकि जैम में अभी इतना कंपटीशन, इतना इतना एक्सपेंडेड कंपटीशन नहीं है जितना हम जेई या नीट में देखते हैं. वहां पे ब्रूटल कंपटीशन है. तो जैम इज मोर अबाउट सिलेक्शन रादर देन रिजेक्शन. So in JAM, they want to select people. So that's why they give you an opportunity to explore your concepts. So JAM is that paper. There, I would agree. JAM का जो pattern है, that is tough to crack because it also has single correct, it has multiple correct, it has numericals. So the pattern to the switching in between the paper, it's tough. I agree. The pattern of JAM is tougher than what it is in JE or NEET, in JE mains or NEET or CUET PG. In that terms, JAM is tough. I agree. But if you have a good command of your concepts, your theories, your questions, your enough practice, there's no stopping to you. और ये सब कुछ जो भी मैं कह रहा हूँ, the theory, concept, practice, ये सब कुछ थर्ड ईयर में होता है. So to revise everything, to currently do whatever you're doing. अब अगर मान लो फरवरी में एग्जाम है, तो फरवरी से अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, तो आप 4 से 5 महीने आप एकदम धीमे धीमे दिन का एक एक दो दो तीन तीन घंटा अगर आप देख के कर रहे हो ना, तो 4 to 5 months इज रियली मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज एवरीथिंग, गिवन दैट आपने पहले के 2 साल में ढंग से सब कुछ कर रखा है. अगर आपने कुछ नहीं करा तो आपके लिए 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको 6 महीने में सारी थ्योरी पढ़ना है. आप इट्स नॉट पॉसिबल. तो 2 महीने में 2 साल में जो आपकी ग्राइंड है ना, वो आप पूरी समेटते हो लास्ट के 4 से 5 महीनों में. अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, मेरे जैसे मत करना. आई एम अ गाय जिसने मतलब शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे. तो आई स्टार्टेड इन दिसंबर मेकिंग शॉर्ट नोट्स. तो मेरे को 1 महीना बस शॉर्ट नोट्स में लगा बिकॉज आई वॉज एबल टू रिकैप्चुलाइज एवरीथिंग जल्दी जल्दी में.
एंड it worked for me, but it does not work for everyone. एक महीने में चीजें नहीं होती हैं, ठीक है. I would genuinely suggest people to try to do it from before than whatever the deadline is to that you set for yourself. To take more time, because when you start studying now, you'll realize there is less time than you think, and it always has been that way. So please. Okay, and how about the other exams, the TIFR, JEST, and CUT-PG? So I was see, I only had see, I did not want to do integrated PhDs, and Okay. IISCs and TIFR and JEST. These all are the exams for the institute who only offer integrated PhDs. Yeah. So I was never serious about them कि भाई मेरे को जाना ही है. But for like IIT JAM, it gives it admissions to IITs जहाँ पे you can just do MSc first, Yeah, because exactly. I did not intend to do PhD from the same institute. मतलब it's just in me कि भाई मेरे को दूसरे इंस्टीट्यूट को भी एक्सप्लोर करने का मन करता है. It may be abroad also. It may be any other institute. तो मेरे का कभी इतना वो नहीं रहा. तो I was like कि okay, just first do the MSc first, and then we can think about integrated PhD या PhD in itself. So I was more focused upon GEM rather than TIFR या JEST. But yeah, the students who are trying to just do integrated PhDs, TIFR is a really good exam. By just it's a really good institute. Please, if you want to do, it's one of the most best institute that you can ever get hands into. And similarly, it's with IISc. And IITs are good, but IIT I would say are better if you're just doing MSc. तो एक MSc level पे IITs are better than IISc and TIFR. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि those colleges are rather short in volume, like small in volume. I'm sorry, rather small in volume. वहीं पे IITs have better opportunities for interdisciplinary conversations also. So वो एक चीज better है IITs में, मुझे ऐसा लगता है. So that's why. और एक लॉन्ग लिव ड्रीम तो था ही भाई, इंजीनियर बनना चाहते थे. तो IITs तो मैं ठीक है Yeah. यार. ना IIT बॉम्बे. Yeah. So, did you appear for TIFR? No, I did not. As I said, I did appear for chest. Did not. It went horribly because I never prepared for it. Okay. I I did not even study a word because I was so relaxed कि भाई ठीक है अब तो हो ही गया ना आईटी में. So I so I was It like was pretty late, I guess. It was in, I guess, May or June. हाँ मई जून में था, तो I was Yeah, like yeah, yeah. I just filled the form just for sake कि ठीक है, just for sake of it कि भाई ठीक है भर देते हैं, but was not serious. And I remember coming out of the exam hall 1 hour prior to what the exam was supposed to be finished. I was like ठीक है भाई छोड़ो ना यार, मुझसे नहीं हो रहा अब. So I was Already like in IITM. क्यों परेशान हूँ यार मैं. Exactly. Right, right. And how did the CUT PG go? So CUT PG is another wrecking ball that people do not realize. So sometimes see, you need to take CUT PG also seriously. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने लिया था, मैंने नहीं लिया था. मैं क्योंकि आई थॉट लाइक मेरा जैम सही चला गया. बट लेना क्यों चाहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आईआईटी जैम के दिन आपके साथ क्या हो जाए. ठीक है. सो सीयूटी पीजी इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आपके लिए. तो सीयूटी पीजी का जो गेम है, इट्स लाइक आई गेस 75 क्वेश्चंस एंड 3 hours इट इज, +4 -1 +5 या +4 -1 5, प्लस around. 5 वट एवर आई. तो उसकी जो मार्किंग है, तो वो वैसी है. इट्स लाइक सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, एंड द लेवल ऑफ सीयूटी पीजी इज रियली बैड. आप क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल फील कि बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. आई गेस आई रिमेम्बर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ कि एक्सेलरेशन की यूनिट पूछी थी. सो आई वाज लाइक ब्रदर आई एम ग्रेजुएट, बट ठीक है, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग व्हाटएवर एनटीए इज ट्राइंग टू आस्क मी, बट Yeah. प्लीज प्लीज थोड़ा एफर्ट मारो. मतलब व्हेन यू विल सी द क्वेश्चंस ना, यू विल फील कि ठीक है इतना टफ नहीं है पेपर. इट्स जस्ट दैट आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन ज्यादा आसान होते हैं ना, तब यू टेंड टू मेक मोर सिली मिस्टेक्स. Yeah, So the silly mistakes is the one that creates the difference. Fortunately, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत silly mistakes करता है पेपर के टाइम पे. मैंने कैलकुलेशन बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करता है. बट ऑन द डे ऑफ सीयूटी पीजी आई वाज लकी इनफ कि मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा था और मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करी. एंड इसलिए वो एग्जाम अच्छा चला गया था, एंड इट वेंट बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड. तो मेरे बाकी दोस्तों के इतना अच्छा नहीं गया था, बट इट वाज गुड फॉर मी. सो आई वाज लाइक ठीक है, टेक इट एज अ बोनस. जाना तो नहीं है, बट ठीक है.
Hmm. but that is the crown jewel. CVT तो I also when I gave CVT it Hmm. was like उठ के चले गए and not as मतलब like it is an exam which you don't prepare for you know mindfully आप करते नहीं हो हाँ, but exactly. fortunately ठीक है rank आ गई single digit and all so how much did you score in CVT PG How much did I score? yeah out of three it is of 300 I made a हाँ, mistake it is plus 4 minus 1 only 75 हाँ, questions and 300 marks दो I don't exactly remember 208 या 209 या ऐसा ही कुछ था, okay ऐसा समथिंग उस थिंग. no no issues there. So, okay, so did you fill any form from CUET, JNU or something? नो, नथिंग. मेरी रैंक आ चुकी थी जैम की तब तक, आई गेस, जब तक Yeah, सीयूईटी का 17th को रिजल्ट. it was the result. हाँ, तो हाँ आई हाँ वाज and लाइक कि 30th को CUET हुई. तो आई वाज लाइक It's the कोई बात. same story for all of us ना. We didn't हाँ, तो ठीक है, कोई बात bother to. नहीं, इट्स फाइन. मतलब क्या करूंगा मैं काउंसलिंग में बैठ के, एंड आई वाज लाइक ठीक है, किसी और को सीट लेने दो यार, जिसको Exactly. जरूरत है. तो बट या, इफ आई वुड हैव टेकन अप सीईटी की काउंसलिंग, देन मैं जेएनयू पहले फिल करता, एंड देन आई वुड हैव गॉन Yeah, फॉर डीयू. तो मेरी प्रेफरेंस में जेएनयू पहले रहता, बिकॉज JNU. आई हैव सीन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इन जेएनयू, इट्स प्रीटी डिसेंट, अच्छा है. और एंड आई वुड से पीपल हु आर, मतलब किसी का जैम अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जैसे भी अगर अच्छा नहीं जा पाया, तो एंड इफ दे आर गेटिंग इनटू जेएनयू, इट्स अ गुड कॉलेज टू बी इन. इट्स क्योंकि वहां पे देखो, सबसे पहले तो अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको चीजों Okay. को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वहां पे. है नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना नहीं है, इट्स नॉट दैट हाई इवन इफ इट इज देयर, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वहां पे पढ़ रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यू कैन टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड स्टडी सेल्फ, अगर आपको किसी और चीज के लिए भी पढ़ना है. सो जेएनयू इज अ गुड कॉलेज इन ऑल, आप रह के भी पढ़ सकते हो. बट वहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स का सीन है, इसलिए ज्यादातर बच्चे वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, बट इट्स अ गुड कॉलेज ओवरऑल. एंड डीयू तो फिर है ही, दैट्स अ गुड Mhm. चॉइस इन इटसेल्फ टू. Okay. और कोई मतलब काउंसलिंग के फॉर्म भरे थे लाइक मतलब नॉट काउंसलिंग इंटरव्यूज वगैरह के आईजर्स में और आईएससी एज यू मेंशनड आई डोंट थिंक सो इट विल बी मच डिफरेंट द सेम स्टोरी इज विथ मी, विथ एवरी कॉलेज, क्योंकि भाई आईएसएल्स वगैरह भी इंटीग्रेट पीएचडीज वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हैं, या एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, नहीं नहीं, तो आई डिड नॉट फिल एनी फॉर्म्स. My friends did fill forms for ICERs, and they did fill forms for the scholarships जो फॉरेन के लिए, जैसे BCGS हो गई, या इरास्मस मुंडस हो गई, रोड्स हो गई, रोड्स हो गई. तो पीपल वर फिलिंग फॉर्म्स फॉर स्कॉलरशिप्स, तो वो बच्चों को कर लेना चाहिए, कि उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी. आई गॉट टू नो अबाउट ऑल दिस व्हेन इट वाज प्रीटी लेट एक्चुअली. ओके So I did not have time enough to gather enough fellow hours, build a rapport and that thing. तो मेरे पे इतना टाइम नहीं एसओपी था. एंड ऑल हाँ, तो मेरे पे इतना टाइम था ही नहीं, बिकॉज एसओपी वगैरह, क्योंकि वो एक चीज है जिसमें आपको प्रॉपर एक महीना लगा के, दिमाग लगा के करनी पड़ती है वो चीजें. एग्जैक्टली एग्जैक्टली So that takes a lot of your time, and I was not in a state to give up more time, because when I was preparing for jam, I was like, okay, या nahi yaar, I cannot bifurcate my focus upon this and this. So I was like, okay, let's pick up jam and do MSc from India, from a good college, from good IIT. And maybe IASC. I was thinking about IASC too, but then I dropped it. Yeah, that was it. So I got into IIT Bombay. जब वो offer letter आया, that was it. और मतलब if a student is in his second year so Hmm. he or she can uh, what I think personally कोई भी ब्रांच के अंदर है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यू कैन जस्ट डू सम इंटर्नशिप्स Hmm. join some professor for a literature review only Hmm. Hmm. when I was in college I also observed this like the people who are doing this they are getting much ahead if you have a review article in your name by the end of your B.Sc, that is a good addition. If you try to get into some foreign university, Erasmus Mundus it starts around September October. I don't know Hmm. of the Hmm. previous year, and October, I yeah, guess. Hmm. so you Hmm. can build your CV by the time you are in the October of the preceding year, and you can start to get the guidance from the seniors. You can Hmm. reach out to them through LinkedIn and all that. I'm sure they'll help. So it is something like I wanted to add in the second year. What you should do in the Hmm. second year, Yeah. be it any stream. You're in any stream, you can
start to just build up your CV, and also, you can build yourself before you light your LOR. LOR is something which is a result of your personality and overall development. That is not something you can do immediately, and also 1 month mein nahi hota. So it takes up a lot of time. So if you are trying to get into some good scholarship abroad for MSc or like graduate program, you can start that from second year or mid second year. So so by the time JAM approaches, you can wrap up your application and also focus on JAM on Mhm. it. So that is one thing. So, how is IIT Bombay? Okay, what do you want? The answer of the truth or Everything, like overall the environment. If a student is about to like he or she is appearing for JAM, like Hmm. what should why should they aspire for IIT Bombay? If a student is about to join, why should they choose Okay. IIT Bombay? That is not a question. Obviously, that is a foolish question of me to ask. But IIT Bombay chooses you. But like if they're joining, what should they expect? Okay, देखो, first of all, uh, देखो, when I'll be saying this, I am a non-biased person क्योंकि I also saw the good and the bad sides of being into IIT. But IIT Bombay, if I must say in a very crude language, IIT Bombay एक vibe है यार, ठीक है? IIT Bombay की अपनी vibe है. Uh, I See, I have, as of a person, did every like event management, everything related to events, joining, dance, drama, club, everything when I was in my bachelor. So I, as a person, did not have that reluctancy to join anything, to do anything. But I was also laid back with the things because I have experienced them before. So, but IIT Bombay conducts every type of event that that you can think of. Okay, tech events, cultural events. They have the biggest cultural fest in India, Mood Indigo, Yeah. which was not uh, managed that good this year, but yeah, it's really, really good. And apart from this, it's just about the college itself. Now, when you're going into the when you will enter the college, you will go into a department. When you talk to your professors, you learn you know so little. तुम्हें कितना कम पता है. You do not know anything. आपने 2 किताब पढ़ ली and you think you do not know nothing. You do not know anything. You are okay. It was my it was my first class. ठीक है, it was my first class. The classical mechanics के professor. His name is K. Das Gupta. He came into the class and his introduction is uh, I have never taken attendance in my 15 years of teaching experience, and I will not take it this year also. But if you skip classes and when you'll see the question paper that I give you, you'll know why you should have attended my classes. So, so you will also meet up with this kind of vibe from the professors that okay, you need to grind here. So IIT Bombay is combination of grind. It's a combination of masti. It's a combination of everything that you can actually think. So you will also play sports. You will make friends. You will make good friends. You will go to Samir Hill, or you will go to and drink some chai at H2 at night with your friends, and it's a complete vibe. आपको पता नहीं चलता कि college सोता कब है. Every like you get night canteens, you go gym, you get everything that you can think of. So as a college, IIT Bombay is a complete city in itself, but there's a downside of it all. Even though it's a rosy feeling to be in IIT Bombay, but coming to academics, coming to the peers that you have, coming to the pressure that you face, it's also humongous. So when you are coming to IIT Bombay, also be wary of the fact that life यहाँ पे आके easy नहीं होती है. Whatever you have studied in B.Sc, leave it there. Just try to think कि भाई वो मैंने किया था, that was just the beginning of it all. Suppose if you had 100%, मतलब हमें पता है कि जैसे ड्यू के जब एग्जाम्स होते हैं, so 1 month before the semester exams you have to submit practical files, you have to do assignments, and you have to give it all the third or second set of internals, everything. It all just comes down to 1 month. एक एक दिन पे चीजें होती हैं. So suppose that's 100% of the pressure. तो उसका जो 90% प्रेशर है ना, जस्ट 90% ऑफ दैट वो आपको थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में आईआईटी बॉम्बे में मिलता है थ्रू आउट. सो इट ड्रेन्स यू. When you're going to masters, it drains you, but you need to have that mental resilience कि आपको you need to get power, you need to power through all this.
So the academic pressure is very high. It's really hectic. I would not say it's easy. The people who say it's easy are either gods or either they're fools. Take it. So, either they study a lot or they do not study anything. So, but if you are in the middle somewhere like me, it's a lot hectic for you. But yeah, everything has a good side. You need to interact with really really good seniors. हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं. दे टेल यू एवरीथिंग, दे हेल्प यू विथ एवरीथिंग. सो योर एडमिशन प्रोसेस से लेके एकेडमिक फीलिंग्स एंड गेटिंग यू कस्टम टू द कॉलेज, एवरीथिंग इज डन बाय द सीनियर्स एंड दैट इज डन वेरी वेरी स्मूथली. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सुनना है और काम करना है. वो जो बोलेंगे ना आप कर दोगे ना, इट विल बी एवरीथिंग. सो यू गेट रियली गुड सीनियर्स, यू गेट रियली रियली एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स. भाई कुछ खड़ूस होंगे, कुछ से आपकी वाइब मैच होगी नहीं होगी, दैट्स अप टू यू. But the fact that when you go and talk to the professors, you will always realize that they have something new to tell you. They are so experienced, they have come from various domains. कोई सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है, कोई क्वांटम पढ़ा रहा है, कोई कंडेंस मैटर पढ़ा रहा है. एंड it's a combination of every field, every every kind of professor is coming to teach you some. Like someone is really good in applicative teaching, someone is really good in labs or everything, and it just all comes down to you how to take all that knowledge. So in IIT Bombay, you'll get the infrastructure for anything, from for literally anything. If you need to do an entrepreneurship, you'll get a science lab. If you want to do sports, you'll have huge. We have a huge ground with two student activity centers and everything like that. You have everything. If you want to study, you have libraries that are like you have reading rooms 24/7 khule hain. So you have everything that you can think of. It's up to you. How do you manage it? So IIT Bombay is there to give, and IIT Bombay is also there to take. But it's up to you. You want to take more or you want to give more. So so Absolutely. so that's one thing. And talking about the academics, how is the academic structure? Like, what are the courses throughout the 4 semesters and So thesis also? so um I do not really know about the courses, the name of the courses in third and the fourth semester, because मैंने इतना thoroughly अभी उसको explore नहीं किया था. But I do not know, but I do know the structure, so I'm not that of Yeah. a newbie in it. So first semester, the first semester is the one that basically kills you from inside. ठीक है, 5 से 6 देखो, 4 और 5 कोर्स हैं आपके. You have 2 labs. ठीक है. And everything that you might have studied in 2-3 semesters वो आपके एक कोर में आ जाता है. बीएससी के 2-3 सेमेस्टर्स की कोडिंग पूरी की पूरी हमारी एक लैब में आ गई थी. एंड आई वाज लाइक द पीपल हु हैवंट टच लैपटॉप्स एंड डन पाइथन एवर, वो कैसे करेंगे. आई वाज कंसर्न फ्रॉम देम रादर देन बीइंग कंसर्न फॉर मी. सो इट्स ऑल्सो अ स्टेज वेयर यू नो इट्स अ क्रेडिट सिस्टम. आप 38 क्रेडिट्स आपको जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं, सो यू डू इट. बट दैट 38 क्रेडिट्स बेसिकली टेक द लाइफ आउट ऑफ यू. Just remember that. So first semester is the hardest one. Please get through it. And okay, so it's a credit based system. आप credits extra ले सकते हो. There are credit courses and there are audit courses. आप audit courses वो हैं जो आप सिर्फ पढ़ना चाहते हो, पर वो क्रेडिट नहीं होंगे. आपकी डिग्री में शो होंगे कि आपने लिए थे, आपके मार्क्स क्या रहे, आप फेल भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट इट जस्ट शोज. एंड वो आपकी मजे के लिए, आप पढ़ना चाहो पढ़ो. वो इंटरडिसिप्लिनरी उन चीज़ों के लिए होता है, आपको पढ़ना है. आप क्रेडिट भी कर सकते हो, इलेक्टिव ले सकते हो. दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी इलेक्टिव्स शायद अब नहीं ले सकते. हमारे फैकल्टी बोल रहे थे कि अब तो नहीं ले सकते शायद. बट हाँ, इफ यू वांट टू टेक सब्जेक्ट्स सपोज दैट आर फ्रॉम योर डोम फील्ड, या फिजिक्स में हो तो फिजिक्स के, या केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री के आप ले सकते हो. दैट इज वन थिंग. आप एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्सेज ले सकते हो ताकि आपके थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा इजी हो जाए. Okay. And then first and second semester are pretty much the same in terms of course order. आपके उतने ही courses रहते हैं, credits भी nearly same ही है. And then you come on to third semester. Third semester has a new thing. You get to choose electives more. So first and second semester में there is not an option for choosing electives. Yeah, so in the third semester you also have the option for choosing electives, and you also have the option of either choosing an elective or choosing a project. Project is what other universities called as MSc thesis. Yeah, teacher. ठीक है. तो इट्स सो प्रोजेक्ट इज वन थिंग. सो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में दोनों में प्रोजेक्ट रहता है. इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन बोथ द सेमेस्टर्स, आप अपने प्रोफेसर या गाइड को बता दो, दे विल टेक प्रोजेक्ट रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर में थीसिस ले लेंगे. या एक सेमेस्टर के प्रोजेक्ट करना है तो एक सेमेस्टर में करके निपटा दो, चौथे में आप इलेक्टिव ले लो.
सो इट्स अ मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन, थोड़ा लीनियरिटी लीनियंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इट्स नॉट दैट रिजिड एंड इट्स नॉट दैट फ्लेक्सिबल, सो इट्स अप टू यू। आप ले सकते हो तो अपने कोर्सेज के लिए, अपनी डिपार्टमेंट के ले सकते हो, बाहर के नहीं ले सकते। बट अपने में ले रहे हो तो देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट दैट यू कैन चूज फ्रॉम। आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक पढ़ सकते हो, ओके। एंड आप क्वांटम पढ़ सकते हो, क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ सकते हो। सो देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू कैन स्टडी व्हेन यू ट्राई टू रीच फॉर इलेक्टिव्स। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गो फॉर प्रोजेक्ट, दैट्स आल्सो रियली गुड ऑप्शन। अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको पीएचडी करनी है, देन आई वुड से प्रोजेक्ट इज अ मस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। होगा तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब इट रियली बूस्ट अप योर सीवी। ओके ओके ओके। And how about the pressure? So you said it is a very rigorous program, right? या And how about the pressure in the third and fourth semester? Like if someone wants to do their thesis in foreign, like exchange programs are also there, right? I've heard of from IIT Roorkee, some of my seniors have gone for the fourth semester in some other country, Germany. I'm not sure about that. Is there any kind of provision in IIT Bombay? हाँ, देयर इज अ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉल्ड मोनाश यूनिवर्सिटी। तो Yeah, आईआईटी yeah. बॉम्बे एंड मोनाश का टाई अप है। So Okay. so students do go for exchange program. There is a PhD student with IIT Bombay. So she'll do 2 years of PhD here with coursework here, and 1 year of lab work here, and 3 years of her PhD thesis and completion in Monash in Australia. So that kind of things are also available. Exchange students, see, our seniors were not the one who go to exchanges, but उनके seniors में कोई थे. So yeah, so there is Oh, provisions for that. Yeah. like I think that is IITB Monash Academy. That is the collaboration, right? I've heard Yeah, of that. yeah, yeah. Uh, but is there something like is there a provision in MSc also, MSc, or it depends? I'm not so sure. It also Okay. depends upon, see, people take. I have literally seen one of my seniors. He wanted to study quantum computing, okay, and do internship in it. So he took an year off after second semester, Okay. and then Okay. he complete after he took an year off, and then उसके वो उनका internship complete हो गई, and then he started, and then he came back to IIT to complete his third and fourth semester. Okay. Okay. So provisions like that also are available. And about exchange, I'm not so pretty sure, but शायद हमारे super seniors में कोई थे जो गए थे। हमारे Okay. immediate seniors में कोई नहीं है, but super Okay. seniors में थे जो इंडियाना यूनिवर्सिटी गए थे Okay. उनका। Okay. I also heard about someone from chemistry who had gone to Indiana. Okay. So for their I guess summer or winter, I'm not sure. या सो हाउ विंटर और समर का क्या सीन रहता है, मतलब विंटर और समर में सपोर्ट कैसा रहता है, प्रोविजंस क्या क्या, कोई टाई अप है क्या, या फिर खुद से करना पड़ता है, थोड़ा सा उसके बारे में। देखो मेजोरिटी तो यू नीड टू हसल विथ योरसेल्फ। फर्स्ट सेमेस्टर में तो देखो विंटर जैसे जो अभी ब्रेक चल रहा है विंटर ब्रेक का, ठीक है, यू कैन, देयर आर जनरली स्टूडेंट्स हु टेक अप सम प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रोफेसर्स दैट दे आर स्टडीइंग, क्योंकि उनके ही उनसे ही बात हो पाती है। या तो आपको कोई प्रोफेसर आपको पसंद है, आपने उनकी प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करी, एंड देन यू लाइक देयर सब्जेक्ट इन समथिंग, एंड देन यू ट्राई टू नो study something under them, so you can approach them and ask for some literature review या anything that can be done experimental अगर आप रुक के कर रहे हो, things like that happen winter में। It's a 1 month thing, so people also try to explore internship, जैसे IIT Bhubaneswar also gives winter internships for one प्रोग्राम, month या yeah 1 month, so people also do that। NCBS है in Bangalore, या या so things like that are also available, so people basically try to wrap up some, rack up some internships or some experience ki taki, they have something in their hand to show basically। So winter is a type of, I would say, an extra step that you take, which may or may not be useful, but summers it's really useful because summers mein जैसे internships they come, they जैसे internship also came for like Indiana University की भी एक आई थी, Caltech की जैसे बीटेक वालों के लिए आई थी। I do not recall getting it for MSc, and then other universities, foreign universities की internships भी आती हैं, and research internships भी आती हैं, आप अपने professors के अंदर कर सकते हो research internships, so things like that are available। तो वो एक चीज रहती है। कोई जापान की भी, आई गेस देयर वाज सम एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर समर। जापान का बीटेक में मुझे याद है मैकेनिकल में था एक, तो वो क्योटो गया था।
Okay. Kyoto. Yeah. Okay. And like, are the professors supporting? Are they supportive if a Some student wants to some go to? are, some are not. All type of people are there in the world. So some So it कुछ depends on the profile you built and the repo you built. hmm. It also depends upon the professor. See, some professors are very willing to take students in their labs. Some professors are very rigorous कि नहीं नहीं आपके पास ये होना चाहिए. So you need Okay. to have this thing, even though you have never heard of it and you do not know where to do it from. Yeah. ठीक है. Like I remember there is one professor, I won't take his name, and my roommate was very wanted to study astrophysics. So he went to that professor and he said ki, you need to know this astropy, and you need to know this, you need to know that, and he was like, Okay. so he just completed B.Sc. How he will know 13 different libraries of Python to Yeah. begin with? So things are like that also are available. कि ठीक है भाई, professors are willing and are also not willing. So it's all kind of mixed there. But majority of them I would say it would at least guide you what to do and from where Okay. to do. So ये चीज के लिए कोई मना नहीं करेगा. But to take in their labs, they are, yeah, they are sometimes they are choosy and sometimes they are not. And same is the case for the project also. Kind of, yeah. And selection to project is based upon the CGPA or a combination of both CGPA interview or SOP, or देखो what is that? CGPA is one of the main factors. ठीक है, क्योंकि when you are trying to apply, see that's this is these are the words of some senior who told me. It's not Okay. what I have experienced with my eyes. But uh, CGPA is the one thing क्योंकि sometimes when you're applying for somewhere unknown, the person who is interviewing you doesn't know you. You do not know the person who is interviewing you. So that person will see your CGPA first because if he or she wants to have a hold of you ki how good of you are as a student without taking your interview, your report card is the one that shows up for it. So getting a good CGPA is one that matters. ठीक है, so try to rack up some good points in your CGPA. ठीक है, कि भाई आप अच्छा जीपीए बना लेते हो तो इट्स एनीवेज अ प्लस पॉइंट हर टाइम पे, तो कोई घाटा तो है नहीं भाई अच्छा जीपीए लाने में. Yeah. तो ऑलवेज ट्राई टू focus upon your academics भी अच्छे से, also while managing SOPs and everything. But हाँ, CGP is a good point. बाकी interviews वगैरह it's all depends upon the person who is interviewing कि भाई उनको क्या चाहिए. So sometimes people are very domain specific कि भाई मान लो उनको quantum information theory there is something like this, उसमें Yeah. कुछ niche है तो वो चाहिए. जैसे someone is taking a project, जैसे there is some IIT Delhi के professor थे, I contacted him and I liked his. He was working on cold atom dynamics and quantum mechanics, and I was like, it was a really interesting topic, and I wanted to learn more about it, maybe through a project or literature review or anything. So that's what he said to me. You need to be here. I would say in Delhi. I would like it's fine. I'll be there in Delhi, and I would do the work, and it's fine with me and everything. But he said ki uh, to get interviewed, you need to know this. So sometimes you need to have a niche. ठीक है, Okay. you have to understand or have a knowledge of something which is really not common among what is being taught to even to your peers. तो आपको खुद से थोड़ा you need to push yourself to learn something new across it. So that's what I say. So people who are trying to get into quantum computing उन्हें पता होना चाहिए ना कि भाई QTIP और Qiskit क्या है, like the libraries in Python what. ठीक है, if you do not know what these are तो नहीं लेगा ना कोई professor. So sometimes you need to push yourself. तो वो एक ये है कि इफ यू सिक्योर सम नीश इन योर सीवी, अगर आप दिखा पा रहे हो इवन इफ यू आर गेटिंग इंटरव्यूड तो यू कैन एक्सप्लेन इवन इफ यू डू नॉट हैव अ Okay. वेरी हाई सीजीपीए तो भी चल जाता है, बट यू नीड टू पुश योर सेल्फ टू लर्न मोर एंड मोर. तो वो एक चीज है. प्रोजेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट द थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, द समर प्रोजेक्ट, बिकॉज Yeah. Yeah. इट अगर आपको किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट से मिल जाता है ना अपॉर्चुनिटी, इट प्रीटी मच गारंटीज यू कि आप उसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में पीएचडी भी करो. PhD. Right. तो दैट्स वन थिंग. And talking about the GPA, like GPA का सीन क्या है? Is it hard? भाई Grading मौत आ कैसी जाती होती है. है थोड़ा? आ भाई जो प्रोफेसर थे क्लासिकल मैकेनिक्स के 100 में से हमारी क्लास का एवरेज 39 है आफ्टर ऑल फोर फोर एग्जामिनेशन. तो इट्स आईआईटी Okay. बॉम्बे की मास्टर्स इन फिजिक्स की क्लास है, 39 एवरेज Yeah. है. सो
आप समझ सकते हो 40% जो है पासिंग मार्क्स है। आईआईटी ने बोला है कि 40% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। हाँ, बट ठीक है, द प्रोफेसर सी इट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रोफेसर्स ओके, उनका मन करेगा तो देख से देयर इज academics में what generally the structure is they take two quizzes and they take a mid sem and end sem are compulsory or they can take a project also or they can take a viva or whatever they please it to। अब द वेटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की किसको क्या देना है इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेसर। ओके, उनका मन करेगा तो 50% मिड सेम को दे दिया और 10% एंड सेम को दे दिया और बोले कि छुट्टी जाओ, या या, ये किसी को एंड सेम देना ही नहीं है तो भी जाओ, उनके मन पे है। ठीक है, इट्स सम द प्रोसेस इज लाइक दैट। एंड देन सपोज एट द एंड यू एंड द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स द मार्किंग इज रिलेटिव, इट्स नॉट या, एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव मार्किंग होती है। तो क्लास के टॉपर को गोली मारने का मन करता है बट वी कांट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अस द राइट, बट ठीक है। क्योंकि उसके अंदर के कारण मेरे बहुत नंबर कट कट जाते हैं, बट कोई बात नहीं। अगर वो 10 नंबर कम भी लाएगा ना तो भी इसका कोई घाटा नहीं है, पर मेरे नंबर काफी बच जाते it's the same हैं। for all of us. We're in the same boat, yeah. तो रिलेटिव So मार्किंग, relative तो marking, रिलेटिव मार्किंग इज गुड एंड बैड इन बोथ द वेज। ठीक है, yeah, इट हैज इज ओन पर्क्स एंड इट कॉन्स। तो वन थिंग इज दैट एंड द थिंग इज आफ्टर वट एवर मार्क्स यू हैव स्कोर्ड परसेंटेज वाइज द प्रोफेसर डिसाइड कि किसको कितने परसेंट के ऊपर क्या ग्रेड मिलेगा। yeah, yeah. तो The द ग्रेडिंग, Gaussian curve, right? the grading system is like A B, B B, B C। Yeah. So AA is Okay, 10 marks and AB is 9 and BB is 8 and so on। okay. There is also one grade AP, which is Mm, exceptional grade। So mm, it also holds 10 value only, but it is given to the student जिसने बहुत ज्यादा अच्छा पेपर कर दिया, something like that। जैसे फॉर mm, एग्जांपल टॉपर है, उसके 90 मार्क्स हैं mm, एंड जो सेकंड, जिसके जो सबसे ज्यादा मार्क्स है सेकंड इन द क्लास, उसके 60 हैं। mm. तो बहुत गैप हो जाता है ना, Right, right. तो रिलेटिव मार्किंग की तो खराब हो जाएगी, टीचर का एवरेज Mm, भी खराब हो जाएगा, ये जो mm. क्लास को एवरेज देना चाहते हैं। तो Yeah. इसलिए वो एक उस बच्चे को एपी ग्रेड दे देते हैं कि तुम हट जाओ, और बाकी Outlier type, man. आउटलायर्स को हटा देते हैं, आउटलायर्स को एपी दे देते हैं एंड बाकियों को आप, They'll start from 60 only. Okay. या Yeah. समथिंग लाइक दैट। तो कई बच्चे हैं उनको एपी भी मिलता है, तो एपी इज अ रियली गुड अचीवमेंट टू हैव। कई बार मिलता ही नहीं है कि भाई प्रोफेसर को मजा ही नहीं आया, दिया ही नहीं किसी को एपी, दिया ही नहीं, मजा ही नहीं आया। Let's talk about the research areas that are being currently explored at IIT Bombay. Like, what are the research areas? What are the facilities? If someone wants to pursue their experimental, theoretical, हाँ computational, what are the facilities? हाँ, सी मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स हियर आर कंडेंस मैटर के। ठीक है, कंडेंस Okay. मैटर फिजिक्स के ज्यादातर प्रोफेसर्स हैं, सॉफ्ट मैटर तो ज्यादातर यही हैं। तो विद प्रोफेसर्स आप ज्यादातर जो है आप कंडेंस मैटर पे काम कर सकते हो। देयर आर लैब्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट की भी है, कंडेंस मैटर की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं एंड कंप्यूटर लैब्स भी हैं। तो इट्स मेजॉरिटी कंडेंस मैटर, बट द मोर बूमिंग फील्ड राइट नाउ इज क्वांटम। तो क्वांटम के जैसे हम पे 3-4 प्रोफेसर्स हैं एंड दे हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ रियली हाई टेक एंड अ रियली रियली गुड लैब ऑफ क्वांटम सिलिकॉन, क्यूएसआई लैब। ठीक है, Okay. क्वांटम सिलिकॉन लैब की एक बहुत अच्छी लैब बनाई है। सो बेसिकली वी रिसर्च विद डिफरेंट मटेरियल्स। सो करेंटली आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी लैब क्योंकि मेरी इंटर्नशिप अलग फील्ड में लग गई है। Okay. बट I am not associated with but the people who want to, it's a really good college to also do research in itself। तो Yeah, yeah. अगर आपको क्वांटम में रिसर्च करनी है ना तो आईआईटी बॉम्बे इज वन ऑफ, क्योंकि जैसे आई गेस 900 समथिंग 900 समथिंग करोड़ इज गिवन फॉर द नेशनल क्वांटम मिशन Yeah, yeah. एंड आई गेस a third of that, nearly 300 crores is being given to IIT Bombay। Okay. So yeah, so IIT Bombay has its own supercomputer, and now they're trying to build more high-tech facilities with that. So 300 crores is a good really budget अगर आपको quantum में जाना है, so you do not need to think about funding because IIT Bombay will fund you। अगर आपको quantum में कुछ करना है तो it's a really really good college to be in because and the professors in quantum are really helpful too। तो इफ यू वांट तो आप सर्च भी कर सकते हैं आईआईटी के प्रोफाइल्स वगैरह पे। सो द प्रोफेसर्स इन क्वांटम हियर आर रियली हेल्पफुल एंड रियली गुड। दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइक computing in itself। So quantum computing and quantum information theory, if you want to pursue these fields, IIT Bombay is the place for you। TI other than TIFR, so the Yeah, TIFR has its own quantum computer, so I won't dispute them,
बट एज अ कॉलेज इन इटसेल्फ जो सिर्फ एमएससी कराता है, आईआईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द नीशेस जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्वांटम। तो क्वांटम इज द वन फील्ड दैट आई वुड से कि इज द मोस्ट बूमिंग वन। अदर देन दैट एस्ट्रोफिजिक्स इज ऑल्सो देयर, कंडेंस मैटर है, एंड देन दिस इज रेडियो डायनेमिक्स एंड कॉस्मोलॉजी है, एंड क्वांटम कॉस्मोलॉजी के भी प्रोफेसर्स हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च फील्ड्स प्रेजेंट ओवर हियर। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू हैव टू डू। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वीएलएसआई है। सो Okay. And for a student who is not from physics or who is in their B.Sc, like you mentioned condensed matter physics and soft matter physics. So what is that? Like, अगर थोड़ा सा उसको explain करोगे तो it would be better. तो मेरे को खुद को नहीं अगर पता है। मेरे को खुद को नहीं पता है। मैं मेरे like को what is it कंडेंस all about? Like is it theory, देखो experimental, computational और क्या देखो है थोड़ा सा देखो मतलब देखो देखो आईआईटी even I got बॉम्बे curious. आईआईटी बॉम्बे इज मोर फोकस्ड अपॉन theoretical सब्जेक्ट्स। सो इट्स Okay, हाई एनर्जी फिजिक्स भी है बट theoretical, okay, इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स भी मिल जाएगी आपको, थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स भी है। सो कंडेंस आपने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ी है तो सॉलिड स्टेट जो है इट्स द स्टेपिंग स्टोन फॉर कंडेंस मैटर फिजिक्स आई वुड से। okay, ठीक है, okay. सो यू बिल्ड अपॉन दैट। सो दैट्स रियली व्हाट आई डोंट नो अबाउट कंडेंस मैटर फिजिक्स। ठीक है, आई डू नॉट हैव माय इंटरेस्ट इन इट एंड इट्स फाइन। आई हैव माय इंटरेस्ट इन क्वांटम एंड आई विल कंटिन्यू इट। तो So what is your niche subject? Like you mentioned you're already into project or you joined somewhere? I got an internship in a different field. I'm in finance. मेरी Oh, internship okay, finance okay, में है। okay, okay, But with if I have to continue, मैं quantum में continue करना चाहूँगा। मतलब okay. even though it's a bit challenging at first because it's not easy, but you need to build upon it with time। तो वो चीज़ एक अलग इफेक्ट रहती है। तो मेरे लिए तो क्वांटम एक वो सब्जेक्ट है जो शायद मेरे लिए वर्कआउट कर सकता है। बिकॉज मी एज अ गाय इज वन गाय जो शायद मैंने जैसे बताया क्यूरियस है। तो थियोरेटिकल इज अ थिंग जो मेरे लिए बड़ी बोरिंग होती है। मतलब आई कैन नॉट Okay. सिट फॉर विद बुक्स फॉर आवर्स। सो वन थिंग फॉर मी इज लाइक दैट। सो चूज योर फील्ड वाइजली कि आपको करना क्या है थिंग्स। How does quantum physics and quantum chemistry differ? I am from chemistry, you're from physics, so let's have a brief discussion on that. So, what is your perspective of quantum? I हाँ won't say mechanics. I'll say हाँ। quantum field as a whole. Like, what is your perspective? What is the research that is currently going on? Quantum mechanics, basically we try to learn the nature of द क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके पास नेचर ऑफ क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बेसिकली Okay. बिहेवियरल पैटर्न्स अगर आपके पास। सो वी बेसिकली ट्राई टू रिलेट एनी टू एटम्स हैं, ठीक है, एंड वी ट्राई टू रिलेट इट विद एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। वी ट्राई टू बिल्ड अपॉन इट। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम का मॉडल है, वी ट्राई टू बिल्ड अपॉन इट। हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स पढ़ते हैं Okay. एंड वी अंडरस्टैंड कि ठीक है इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। इस अगर अगर इसको एक वेव फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो वेव फंक्शन कैसा होगा। तो समथिंग लाइक दैट बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि वी ट्राई टू विजुअलाइज मोर एंड नॉट जस्ट एंड अप्लाई इट and not just study. So quantum chemistry is different in the fact कि it more focuses upon bondings कि हमारे जो Yeah, yeah. bondings हो रही हैं क्वांटम वो उसको हम क्वांटम Level क्वांटम पे थ्योरी, कैसे? हाँ क्वांटम थ्योरी के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वी डू नॉट डील विद बॉन्डिंग्स, वी डील विद जस्ट द इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर इटसेल्फ। वो Okay. एक चीज है जो थोड़ा डिफर करती है। So our approach differs in the fact that we try to, firstly we'll start with as you mentioned, like we'll start with 1D box, then we'll move up to SHO, then rigid rotor, and then we'll move up to hydrogen atom. Then we'll try to move towards the multi-electron systems, like the Hamilton, that start with Hamilton. Then we'll move to the solid state physics. Yeah। When we'll start about the 1D materials, then we'll build to 2D, 3D, and हम्म। understanding, theoretically understanding how is the bonding in it and why is this paper if it is a solid then why it is solid. That's what I think that is the difference. So you study individualistic and we study about the bulk. या I think that is the difference. Okay. Okay, so that's pretty much a lot of talk about academics. So how is the life at IIT Bombay? You briefed it about earlier, but I would like you to focus more. Uh,
More about the life at IIT Bombay. So life at IIT Bombay, good, I would say. First of all, though, it is not that what I expected. See, in my mind, I expected a lot more fun, but it's not because of IIT Bombay is a bad college, but because I am in physics. So IIT Bombay in itself gives you literally anything that you can think of what it can have as a college. It has a lot of hostels. It has every hostel is a mess. You get um, good hygiene, good sanitation, everything is present in the college. Okay. First of all, the basic amenities are everything there. Now, when it comes to fun and everything, so you have good lecture halls. ठीक है, आप क्लास करने में मजा आ जाता है। पहली बात तो ठीक है, आप देखते हो अरे वाह यार कितना बड़ा ब्लैक बोर्ड है, कितना बड़ा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, so large halls with two floor seatings. मुन्ना भाई वाला. हाँ, two floor seatings, literally two floor seatings. So you feel like Yeah. कि अरे भाई आप कहाँ आ गए हो and things like that. So first of all, so it's a majestic feeling to be there in a college with so many people, like 13-14,000 people who are doing so many things in so many different fields. ठीक है. First of all, so you get inspired by it, and then when you get inspired, you try to focus your energy on different things. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप स्पोर्ट्स की बात करें जहाँ पे अगर आपका फोकस कर सकते हो तो स्पोर्ट्स यू हैव एनीथिंग लाइक स्क्वॉश है, बैडमिंटन, स्विमिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इंडोर कोर्ट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ है। लाइक टेक एनीथिंग यू हैव इट। ठीक है। Yeah. एंड इवन एवरी हॉस्टल हैज इट्स ओन रिक्रिएशन रूम, तो वहां पर भी जैसे टेबल टेनिस, सिटिंग रूम्स और टीवी वगैरह ये सब कुछ रहता है। सो यू कैन चिल, ले बैक। सबके यहाँ स्टडी रूम्स होते हैं। Yeah. अगर कुछ नहीं करना, पढ़ाई ही करनी है जिंदगी में सिर्फ, तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छा खासी जगह है। तो इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। एंड देन यू हैव ड्रामेटिक्स के क्लब है, बहुत ही अच्छा क्लब है। म्यूजिक के क्लब है। ठीक है। और ये यहाँ जैसे हमारी सोसाइटीज होती है ना डीयू में, यहाँ पे Yeah, क्लब्स yeah, होते yeah, हैं, yeah. यहाँ पे क्लब्स होते हैं। Okay, okay, okay. तो म्यूजिक के क्लब्स हैं, बहुत 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 ज्यादा अच्छी फंडिंग आती है। तो कभी Hmm. किसी चीज को कराने में पैसे की कमी नहीं होती, कभी स्पॉन्सरशिप के लिए रोते नहीं है जैसे हम लोग रोया करते थे। Classic new experience. हाँ हाँ। तो वो Yeah. 8-5 हजार रुपए का दान दिया गया है, यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ती। तो एंड यू, PR टीम भाग नहीं रही होती उसमें. हाँ, सो कि हमें इतना दे दो, उतना दे दो, कुछ नहीं है। यहाँ पे Uh, बहुत पैसा आता है बिकॉज एलुमनाइज बहुत पैसा दे देते हैं यहाँ yeah, पे। yeah, yeah, एलुमनाइज बेस तो बहुत ही अच्छा है यार। yeah. एलुमनाई बेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नंदन नीलेकनी से लेके तुम, कौन है, नारायण मूर्ति और संदीप कृष्ण मूर्ति, और पता नहीं कितने कितने तो लोग हैं जो यहीं से ही हैं। तो इट्स ऑल। और ड्रामेटिक्स अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, लिटरेरी क्लब अच्छे हैं, लिखना है तो कर सकते हो। बहुत सारी सोसाइटी है, कृतिका एस्ट्रोफिजिक्स का क्लब है, एस्ट्रोनॉमी का क्लब है। तो आपका जो भी चीज में चाहते हो ना, अरे यार इतने रैंडम क्लब्स है ना। एक रोवर क्लब है, जो रोवर्स बनाता है ना, वो उसका Yeah, क्लब है। yeah, yeah. एक I've heard एक of it. Yeah. एक वो प्लेन उड़ाते हैं, उसका क्लब है। हेमंत करके Uh, मेरा एक क्लासमेट है, वो उस क्लब में है, उसके साथ दो तीन लोग हैं। yeah. तो इट्स ऑल इट, व्हेनेवर यू ट्राई टू एक्सप्लोर ना, आप कर सकते हो। आपके पास Hmm. अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं टू बेसिकली चैनल योर एनर्जी एवरीवेयर एनीवेयर दैट यू लाइक। तो लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे, इफ अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, इट्स रियली चिल। आप रात के 1 बजे भी निकल जाओ, 2 बजे निकल जाओ, आपको खाना मिलेगा। आप घूमने निकल जाओ, आईडी कार्ड दिखाओ, और आईडी कार्ड दिखाओ और बाहर चले जाओ, कोई कुछ नहीं पूछता। सो इट्स एवरीथिंग Yeah, अप टू yeah. यू। यू हैव इनफ फ्रीडम। Freedom. इनफ फ्रीडम। और फ्रीडम किसी और चीज की भी है, लेकिन अगर ये पारिवारिक श्वेत तो मैं और बता नहीं चाहूंगा। फैमिली देखती है. हाँ, अगर ये फैमिलियाँ देख रही है तो मैं नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन हाँ, Yeah. फ्रीडम हर चीज की है, तो मतलब हर चीज की है। ठीक है। Yeah. सो या। Okay. I think it's pretty much the same experience in all the IITs, and it is actually a good experience. हम्म। You get, when you come out of Delhi, uh, being from DU, the small छोटा सा confined campus, अंदर एग्जैक्टली। hostel, तुम अरे हॉस्टल में थे? हाँ, मैं हॉस्टल में था। ओके, तो हाउ वाज सीक्वेंस का हॉस्टल, कैसा डिफर करता है यहाँ से? तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टीफंस का जो हॉस्टल था, इट वाज नॉट बिग। मतलब एक हॉस्टल में मैक्सिमम देखो, 3 हॉस्टल थे लड़कों के, 3 हॉस्टल थे ओके, लड़कियों के। ठीक है। ओके. तो एक हॉस्टल में 40-50 बच्चे,
और दूसरे में 60-70। मैं तीनों लड़कों के हॉस्टल में रह लिया हूँ, ठीक है, मतलब 3 साल थे हाँ मैं, तो मैं तीनों में रोटेट कर लिया 3 साल तो। yeah, हाँ, तो एक में 40-50 के करीब की स्ट्रेंथ थी, एक में 60-70, एक में ऐसे, तो इतने तो एक फ्लोर पे आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब yeah, 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 आईआईटी yeah. आईआईटी में इतने फ्लोर पे आ जाते हैं इतने Hmm. तो द स्केलिंग इज बहुत डिफर करती है, बहुत Hmm. बहुत मैसिव स्केल पे बना है। 550 एकड़ का कैंपस है, मतलब Hmm. आईआईटी का और बड़े बड़े भी हैं, जैसे खड़गपुर तो 2900 हाँ एकर्स में है। तो वो yeah. तो इतना बड़ा है कि उसमें तो गांव आ जाते हैं अंदर, तो हाँ हाँ. इतना बड़ा नहीं है, लेकिन City in हाँ। itself, yeah. हाँ मतलब, लेकिन हाँ, अब डिफरेंस क्या है, स्टीफंस में हॉस्टल से आप निकले, 1 मिनट दूर पे क्लास है, यहाँ से गए सामने हाँ. क्लास, वो साइंस ब्लॉक दिख रहा है, Hmm. आप चले गए। यहाँ पे दो Hmm. किलोमीटर दूर क्लास लगती है। Cycle through. सुबह मन बनाना पड़ता है भाई, जाए ना जाए। हाँ, ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थिंक मेस भी भाई दूर गए होती है. तो फिर लंच गया, ठीक है, हाँ. लौट के कौन जाएगा, तो थिंग्स लाइक दिस हैपन, तो एक स्केलिंग बहुत डिफरेंट है। बाकी द एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल इटसेल्फ इज रियली डिफरेंट। देखो मेस थोड़ा सा बेटर है स्टीफंस के कंपैरिजन में, Yeah. बट द कमाडरी एंड द ब्रदरशिप जो लोगों में स्टीफंस में थी, ये इतनी यहाँ नहीं है। मतलब द आईआईटी में क्या है ना, पीपल आर मोर फोकस्ड अपॉन एकेडमिक्स मोर, एंड एक सेमेस्टर Yeah. इतना इतना इनफ टाइम नहीं होता कि आप एक प्रॉपर बॉन्डिंग कर सको। आप बॉन्डिंग आपकी है. आपकी अपने रूममेट से हो सकती है, अपने क्लासमेट से हो सकती है, लेकिन इतने ज्यादा हॉस्टल मेट से नहीं हो पाती। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि आपके दो कमरा छोड़ के कौन रहता है, आपको नहीं पता चल पाता। एग्जैक्टली. सो एक 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 सेमेस्टर इज नॉट इनफ टू फॉर मी टू ये कि से कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट अभी तक तो नहीं मिली मेरे को इतनी ज्यादा। ओके. है ना, बट हाँ, स्टीफंस वाज द फैक्ट कि हाँ भाई, आप आपका पूरा हॉस्टल ही आपका दोस्त है। इट्स लाइक दैट ओके. आप। या. तो हमारे मेस में तो ऐसा होता था स्टीफंस में कि हम जैसे फर्स्ट ईयर के लड़के हैं तो सब एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे। या 40 बच्चे हैं तो उठा के 30 फीट की टेबल है तो हम लाइन से बैठे रहे. लाइन से बैठ के या खाना खा रहे हैं। टेबल्स कौन बांट लेते हैं आई थिंक वो. हाँ डीयू. तो तो अब कौन इकोनॉमिक्स का है, कौन फिजिक्स का है, हाँ कोई हाँ फर्क नहीं हाँ, पड़ता, तो सब आप. मर्ज हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली इट एग्जैक्टली. ऑल, तो जैसे मेरा मेरा जो रूममेट था फर्स्ट ईयर में, वो बीएससी से था, बीएससी प्रोग्राम, या. है ना, और मेरे बगल वाला मैथ्स का था, इधर वाला बीएपी का था, हम सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो वहां पर द इंटरडिसिप्लिनरी जो फीलिंग होती है ना, वो गायब इंटरेक्शन हो इज जा आल्सो वेरी वो गुड. गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा है, फिजिक्स का कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, मैथ्स का कौन है, क्योंकि तीन चार इन सब्जेक्ट ही एमएससी है। एंड बीटेक आल्सो वहाँ पे डिफर. हाँ, आई और थिंक थोड़ा सा. पहले तो देखो, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, बीटेक और एमएससी का डिस्क्रिमिनेशन झेलो, फिर एमएससी में मैथ्स फिजिक्स और इनका डिस्क्रिमिनेशन हाँ झेलो, हाँ. स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स वाले इंटर्नशिप लेके चले जाते हैं, हम बैठे रहते हैं, अरे भाई हमें भी कुछ दे दो भाई। तो Yeah. तो वो एक चीज आ जाती है, बट वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता था स्टीफंस में। देयर वाज, Yeah. क्योंकि क्या देखो, स्टीफंस में 1200-1300 बच्चे ही हैं टोटल, तीनों साल चारों Yeah, साल yeah, मिला के। yeah. तो इतने बच्चे तो यहाँ पे H18 में हैं। Mm. इधर इधर हॉस्टल है हमारा सबसे बड़ा, Yeah, yeah, एच yeah, एटीन yeah. में इतने बच्चे हैं। तो वहां पर एक स्केल का बहुत फैक्टर होता है कि आपके इतने लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता, इवन तो इतने ज्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना Mm. से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन वहीं पे अगर आप एक क्लोज छोटे कैंपस में हो, तो आप हर एक बंदे को जानते हो लिटरली, और उनकी पर्सनल लाइफ भी चली पता ही चल जाती है फिर थोड़े थोड़े टाइम में। एग्जैक्टली. हाँ, वो तो साथ में रहते हैं साथ तो. में रहते हैं कि कौन किसके, ठीक है चलो छोड़ो। तो आई थिंक तो वो सेम बहुत ही मतलब बैकग्राउंड सेम है, तो आई कैन रिलेट विद यू एंड आई कैन एसोसिएट माय लाइफ एट हंसराज विद योर लाइफ एट स्टीफन, सो हाँ, इट तो इज काइंड ऑफ सेम. वो चीज ना बहुत अफेक्ट करती है कि आपका छोटा कॉलेज है, कम लोग हैं, और भाई हॉस्टल में तो सिर्फ 300-400 लोग ही थे, तो या. आपको पूरे हॉस्टल का पता था कि यार तीनों ब्लॉक में कौन लड़के हैं कौन लड़कियां हैं, क्योंकि मैथ्स में सब हाँ. दिखते थे, बातचीत होती थी। तो इट एग्जैक्ट. वाज ऑल, स्टीफन वाज मच मोर फ्रेंडलियर आई वुड से देन आईआईटी बॉम्बे, बट हाँ, आईआईटी बॉम्बे हैज मोर अपॉर्चुनिटीज देन स्टीफन, ऑफ कोर्स, इट्स ये तो गिवन फैक्ट है। बट एज इन होल अपने अपने पर्क्स हैं दोनों कॉलेजेस के, एंड आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर, बट माय टाइम इन बोथ आर, मेरा बढ़िया ही जा रहा है। Nice. So, since I have covered all my points which I had thought to, ask you for this हाँ हाँ podcast, हाँ if you हाँ। would like to add something or build upon something, I would really So appreciate that. what you would like me to talk upon to the people who are preparing something or Yeah, anything in preparing general? into, you can start from 12th class का बच्चा, if he's watching, he or she हम्म। is watching, तो वहां से लेकर के up to your level, MSc के level तक का, if they are joining. ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, मतलब आई एम अ पर्सन हु इज लिविंग देयर लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे लिए अगला दिन पहली बार ही आएगा। बट फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड,
I have failed more exams than I have cleared. So Okay. I have also the perspective of a person who has experienced failure and success both. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट एक आध पेपर निकाल लिया है तो ठीक है। आई वॉज ऑल्सो इन 11th एंड 12th, तो मैं सोचता था कि ठीक है यार, अपना भी आईआईटी में जाके 1-2-4 करोड़ का पैकेज लगेगा और हम फॉरेन में होंगे और एक बढ़िया घर में रहेंगे, यानी ये सब हम सब सोचते हैं। बट लाइफ एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी डिफरेंट, एंड लाइफ जैसे जैसे टर्न होती है ना, इट गिव्स यू मोर एक्सपीरियंसेस रादर देन गोल्स। Yeah. आपके पास एम कम चीजों का होता है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस भतेरी चीजों का होता है। सौरभ द्विवेदी बोलते हैं ना, आपने भूखी रात नहीं काटी, या बहुत ज्यादा खाना नहीं खाया, या बेफिक्र होके सो नहीं गए, तो आपने जिंदगी भली जी ली हो, Yeah, लेकिन yeah. वो जवानी कतई नहीं है। तो दैट इज व्हाट आई वुड से कि यू आर इन 11th 12th, आपका ग्राइंडिंग ईयर है तो आप करो। आग अगर आप बीएससी में हो तो भी आपका ग्राइंडिंग ईयर है, लेकिन मजे भी करो। मेरा ये है कि देखो, कॉलेज लाइफ वोंट कम ट्वाइस, यू वोंट गेट टू बी अ स्टूडेंट अगेन। आई थिंक दिस, अगर मैं पीएचडी नहीं परस्यू करता हूँ तो एमएससी वुड बी माई लास्ट चांस टू बी अ Last स्टूडेंट। chance. Yeah. टू बी अ स्टूडेंट। तो भाई, स्टूडेंट होने के अपने मजे हैं, कोई आपको ना दिमाग खराब नहीं करता कि मेरे को पैसे ला के दो। आप अपने शर्तों पे जी सकते हो, ठीक है, अपने शर्तों पे पढ़ सकते हो। सो अगर आपको इतनी फ्रीडम है किसी चीज की, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट वाइजली, एंड इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एनीवन हु इज वाचिंग मी, मेरा तो यही मैसेज है कि देखो, यू नेवर नो हाउ योर लाइफ विल टर्न आउट। क्या मेरे तो प्लान्स और ही थे, कहाँ एमबीए का कभी सोच रहे थे, कहाँ तो कभी जेई का कुछ सोच रहे थे, बट नाउ आई एम हियर इन आईआईटी डूइंग एमएससी। बोथ ऑफ द कॉलेजेस एंड कोर्स जो का शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी परस्यू करूंगा, व्हेन आई वाज इन 8th या 9th या 10th, या जब भी पढ़ रहा था। बट हियर आई एम। सो लाइफ नेवर हैज द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो हमेशा ऑलवेज बिलीव इन गॉड्स प्लान। आप हमेशा ये चीज समझिए कि वेर एवर यू आर ट्राइंग टू गो, ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज में, तो इवेंचुअली यू लैंड समवेयर, समवेयर गुड, समवेयर सेटिस्फैक्टरी, एंड देन यू विल रियलाइज कि ओके, एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार हैज लेड यू टू बी हियर, एंड हैज आल्सो मेड यू हैव एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस गेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज हमेशा करिएगा, दोस्त बनाइएगा। धोखे मत खाइएगा, लेकिन दोस्त बनाइएगा। तो चूजिंग योर फ्रेंड्स इज ऑल्सो वाइजली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो मैंने तो भाई बहुत फ्रेंड ग्रुप्स बदले, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कई बार आपको लगता है कि आपकी वाइब मैच हो रही, बट आपकी नहीं हो पाती। कई बार Yeah. कुछ लोग जो आपको अच्छे लगते हैं, फिर वो नहीं लगते। और Right. कुछ लोग जो अच्छे होते भी हैं, वाइब भी मैच होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ This जाती one. हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, Yeah. किस्मत खराब होती है, Yeah. Yeah. डिस्टेंस आ जाती है, बहुत चीजें होती हैं। So but every time try to have some people around you who you can talk to, क्योंकि सोसाइटी एज इन अ होल आपके इन्हीं छोटे 3-4 लोगों से स्टार्ट होके बनती है। तो Exactly. ऑलवेज बी अटेंटिव विद थिंग्स, ऑलवेज बी, क्या कहते हैं, जागरूक, अवेयर विद थिंग्स। तो अवेयरनेस हमेशा रखिएगा। एंड मैं बहुत ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं इससे ज्यादा ज्ञान देना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। एंड Okay. हाँ, तो जयवीर के पॉडकास्ट को हमेशा सुनते रहिएगा, बिकॉज मेरे जैसे 2-4 ज्ञानी और आते रहेंगे। तो प्लीज। Yeah. So since we have covered all the topics and Dhruv has given all his experience, has shared all his experiences, I think it's a time to wrap up this podcast. This whole duration was a great opportunity for me to learn personally, since I have interacted very less with the physics guys. I had friends, obviously, in Hansraj also and here also, but uh, as a researcher or as a budding student, it is the first time interacting with the physics guy. And since you're the first guest from physics on this podcast, I really thank you for being here. Thank you for being, so वेलकम। kind to come here and share your journey with us. And I surely think that the students who are watching this will surely benefit from it. I thank you once थैंक यू again थैंक for being here, and hopefully we'll have another interaction with you sometime later. And, and that is it for this video. Thank you for joining us, and thanks to the viewers for watching us. In case any of the viewers have any doubt, they can drop it in the comment section, and I'm sure Dhruv will take out time to reply to them. So that is it for this video. Stay tuned to the Learners Podcast, and I'll see you in the next one. Bye bye.
Thank you for having me. Thank you, JV.